as I flick through it. So some of the pain points which have been mentioned by the companies here in Pakistan, one can relate to that. So I've just picked up a little over 50%, where that threshold is 50%. I've just picked up those points where these pain points are there. Lack of policy continuity, instability of PKR exchange rate, difficult in FX remittance due to FX control, high security risks and high security inputs, low administrative efficiency. And one can relate to all of these pain points which have been mentioned by all our friends here and who have been here with us for a while. Now, what I can say, as we have moved towards macroeconomic stability, that and as you've seen in the last 12 to 14 months, the exchange rate have been stable. The foreign exchange reserve in the next 2 weeks will touch $11 billion, which means we are going to get to roughly 2.5 months of import cover. The global standard and global good standard is 3 months of import cover. Now, ladies and gentlemen, we are coming from where we were in 2 weeks of import cover. So we moved in the right direction. So I can assure all our friends here that inshallah, the hiccups that you have seen and the delay that you have seen in terms of your FX and dividend remittances, inshallah, will not recur. Lack of policy continuity, you are absolutely right. And under Prime Minister Shehbaz Sharif's leadership, we always say the government has no business in being in business. Government has to provide policy framework and policy continuity. So you're absolutely right that we need to provide that level of continuity. The high security risks, the Honorable Ambassador is here. He knows very well, under President, Prime Minister, Chief of Army Staff. We are very committed, the Interior Minister, who is working day and night to make sure that this is done, notwithstanding the unfortunate incident that was just mentioned earlier in the meeting today. But we are very committed. And low administrative efficiency. We say it to our Chinese friends. We said it to our Saudi Arabian friends a couple of days back, from red tape to red carpet. And we are absolutely clear that we need to bring down the level of bureaucracy and the level of red tapeism that we have in the government, and we remain committed to that. So what you have mentioned here in terms of your pain points, first of all, we relate to that as government, and we are very clear that we need to do something about it. Now, part two, which is very encouraging, that notwithstanding these pain points, what you mentioned here, my friends, is that majority of Chinese companies are optimistic about their order situation in the next 3 months. Among them, 50% or 47.9% expect their newly signed order amounts or purchase volumes to remain stable, and roughly 40% expect growth, which is absolutely music to my ears, music to our government's ears. 37% of the companies have indicated that they will expand their production sales in the future, and roughly 25% are saying they will increase their workforce. I won't go more into detail of this, but these are what the Minister mentioned, what the Honorable Senator mentioned. This is the true test of long-standing partnerships. Notwithstanding the pain points, you, along with us, remain optimistic about the future of Pakistan. And Mr. Wong Huiha, I'm very grateful to you for the invitation today, but also for the first time publishing this kind of report, because this brings transparency. This brings transparency. So I'm very grateful to you. On behalf of the government, we remain very committed, and as Minister Tarar said, we are absolutely over the moon. We are excited that Premier Lee is going to be here as part of the SCO conference, and we look forward to reciprocating even a small portion of the generous hospitality that we received when we were there in Beijing with Prime Minister Shehbaz Sharif, the generosity which was extended to us
by President Xi and Premier Liu. Once again, thank you very much for the invitation. Thank you. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की मैशत मुस्बत समत में गामज़न है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। चीन पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। चीन की पाकिस्तान में तवानाई शोबे में सरमायाकारी काबिल तहसीन है। सी पैक के दूसरे मरहले का आगाज़ करने जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाक चीन क़यादत सी पैक के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेहकाम आया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफा हो रहा है। चीन ने सी पैक के तहत पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामज़न है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। चीन पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। सी पैक के दूसरे मरहले का आगाज़ करने जा रहे हैं। पाक चीन क़यादत सी पैक के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन ने सी पैक के तहत पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी की है। मुल्की बरामदात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामज़न है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। चीन पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। चीन की पाकिस्तान में तवानाई शोबे में सरमायाकारी काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामज़न है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। चीन ने सी पैक के तहत पाकिस्तान